Hello, Bachcho. Welcome to Adishri Publication. In our today's EVS class, we are going to see your chapter number 3. And the name of your chapter number 3 is Flying High. In this chapter, my dear student, we all are going to see what? Let's see the concept overview. First of all, features that help a bird to fly. Okay, in this chapter, my dear student, we are entirely going to see about birds. Okay, feathers, beaks, making nest, hatching of eggs, sound of birds, migration of birds. Okay, so all this thing we are going to discuss in this chapter. And as well as, let's see, my dear student, what is the curricular goal we are going to discuss in this chapter. Identify different types of bird. Okay, in this chapter we are also going to see the different types of birds and how we are going to identify them. Okay, understand birds feature. Okay, and as well as we are also going to discuss about the features which is present in the body of the birds, like beaks, claws, feathers, and how they help in survival. Then observe bird behavior and develop curiosity, and as well as we are also going to develop the bird's behavior. Okay, so you all are excited to start the chapter. Come with me and let's see. Birds. Birds are the most beautiful and colorful creature on the earth. So हमारे planet earth का जो सबसे ज्यादा beautiful और सबसे ज्यादा colorful creature है वो कौन है? Birds हैं, ठीक है? They are an important part of our environment. Birds have wings which help them to fly, but all birds cannot fly. ठीक है? Birds are very important part of our environment. Okay? You know what? Birds have wings. Okay? And maximum birds can fly, but some of birds can't fly. Okay? Now, features that help a bird to fly. तो वो कौन कौन से फीचर्स है जो एक बर्ड को उड़ने में हेल्प करता है? तो देखिए, लाइट वेट, बोट शेप्ड बॉडी, पावरफुल विंग्स, hollow bones, smooth and light feathers help the birds to fly high in the sky. तो जो हमारी बर्ड्स होती है ना, इनकी बॉडी का वेट बहुत कम होता है, तभी तो ये हवा में उड़ पाती हैं, ठीक है? साथ ही साथ इनकी जो बॉडी का शेप होता है ना, बोट के शेप में होता है। ये देखिए, ये देख रहे हो, ये इस तरीके के बोट के शेप में होता है, ठीक है? इनके विंग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी चिड़िया क्यों ना, उसके विंग्स बहुत स्ट्रांग होंगे तब, ठीक है? इनकी जो बोन्स होती है ना, इनकी बोन्स भी बहुत हॉलो होती है, ठीक है? इनके फेदर्स बहुत ज्यादा स्मूथ और क्या होते हैं? लाइट वेटेड होते हैं, इसीलिए ये लोग स्काई में इतना ज्यादा ऊपर उड़ पाती हैं, ठीक है? सो यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द बॉडी पार्ट्स, दिस आर द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ So you can say this is a body part of a bird. Okay, so these are the feathers, these are the tails, this is feet, this is beak. Okay, तो ये सारे हमारे bird के क्या हैं? बॉडी पार्ट हैं, ठीक है? ओके, नाउ ट्रुथ बैंक देख लेते हैं, इसमें क्या है? ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन आर सम बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई. अभी आप लोगों ने पढ़ा है ना, बहुत से बर्ड्स ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते. तो वो कौन कौन से बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते हैं? वो है ऑस्ट्रिच, कीवी और पेंगुइन, ठीक है? ये तीनों हमारे बर्ड्स हैं, बट दे कांट फ्लाई, ठीक है? चलिए, नाउ द फर्स्ट बॉडी पार्ट ऑफ आवर बर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फेदर्स, ठीक है? तो बर्ड्स की फेदर्स क्या होती हैं? लेट्स सी. All birds have feathers. They are of two types, down feather and flight feather. देखिए, सारे बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं हमारे प्लैनेट अर्थ में, सबके पास फेदर होती है, ठीक है? इनके पास ना, ये जो इनका फेदर होता है ना, ये दो टाइप का होता है, ठीक है? एक तो डाउन फेदर होता है और दूसरा एक फ्लाइट फेदर होता है. ये क्या होता है? चलिए देख लेते हैं. डाउन फेदर्स आर लोकेटेड क्लोज टू द बॉडी, दे कीप द बॉडी वार्म. जो डाउन फेदर होता है, ये बर्ड्स की बॉडी के बिल्कुल पास होते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से बर्ड्स की बॉडी बहुत गर्म होती है, ठीक है? Flight feathers are long and strong and are found on the wings and the tails of the bird. जो flight feathers होते हैं, ये बहुत लंबे होते हैं, बहुत ही strong होते हैं, ठीक है? अगर ये लंबे और strong है तो ये पाए जाएंगे आपके wings के पास, क्योंकि wings भी strong होती हैं, ठीक है? ये wings के पास या फिर birds के tail के पास पाए जाते हैं, ठीक है? They help the birds to fly and change direction while flying, ठीक है? यही वो फ्लाइट फेदर्स होते हैं जो बर्ड्स को उड़ने में और साथ ही साथ उड़ते हुए अगर उन्हें डायरेक्शन चेंज करना है तो उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है? ओके बच्चों, आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे फेदर क्या है, ठीक है? सो द नेक्स्ट बॉडी पार्ट ऑफ आवर बर्ड्स आर बिक्स, ठीक है? तो बिक्स क्या होता है देख लेते हैं. बर्ड्स हैव नो टेथ. They use their beaks to eat. Beaks are of different types. देखिए my dear students, birds, okay, birds don't have any type of teeth, okay, but if they don't have if they don't have teeth, then how they can eat food? Okay, they eat food with the help of beaks, okay, and on the basis of beaks, or on the basis of different types of birds, they also have different types of beaks. Some of them we are going to see.
So first type of beak is strong and hooked beak. Okay, तो पहला क्या है आपका strong and hooked beak. See, a parrot has a strong and hooked beak to bite hard fruits and to open nuts and easy. Okay, so the parrot is a bird. So parrot have a very strong and hook shaped beak. Okay, and due to this hook shaped beak, parrots can bite fruits easily, and as well as they can crack the nuts. Okay, now the second type of beak is short, hard and pointed beak. Okay, short, hard and pointed beak. Sparrows, peacock, pigeons have short, hard and pointed beaks to eat grains, seeds and to crack nuts. Okay, so some other birds like sparrows, peacocks and pigeons, their beaks are very short and they have a sharp they have a sharp pointed beak. Okay, this sharp and pointed beak help them to eat grains, seeds and cracking nuts. Okay, now the third type of beak is broad and flat beak. Okay, so the third type of beak which birds usually have, broad and flat beak. Now which birds have broad and flat beaks? Let's see, duck has a broad spoon-like beak to dig soft mud near a pond and to find worms with the help of its beaks. Okay, so ducks have such type of beaks. Okay, and due to broad and flat beaks, they can dig the muddy soil, and by digging that muddy soil, they can easily catch worm and eat them. Okay, now the next type of our beak is sharp, strong and pointed beak. Okay, sharp, strong and pointed beaks. A woodpecker has a chisel like sharp beak. Okay, so which bird have a very sharp, strong and pointed beak? Woodpeckers. Okay, it makes holes in the trunk of trees and catches insects with the help of its beaks. Okay, so with the help of sharp, strong and pointed beak, woodpecker can make a hole in the tree trunks. Okay, and by making that hole, they can easily catch the insects and eat them who used to reside within the trees. Okay, now the next type of our bird beak is strong, sharp and hooked beaks. Okay, strong, sharp and hooked beaks. Birds of prey like eagles, vultures and owls have a strong, sharp and hooked beaks which help them to tear up the flesh of their prey easily. See, till now all the birds used to feed on seeds, grains, nuts or as well as insects. On the another hand side, my dear students, we have some birds who used to feed on other animals, means they used to eat the flesh of other animals. Okay, so such type of birds have a strong, sharp and hooked beaks like eagles, vultures and owls. Okay, their beaks are very strong, they are very sharp and hooked shape. Okay, that's why this type of beak help them in tearing up the flesh of other animals. Okay, so you can see, my dear student, this is the picture of different type of beaks. Okay, now the truth bank, let's see. The sword-billed hummingbird is the only bird whose beak is longer than the rest of the body. इस पूरे वर्ल्ड में माय डियर स्टूडेंट एक sword-billed hummingbird नाम की एक चिड़िया है जिसका जो beak है ना वो उसके पूरे बॉडी से बड़ा है. ठीक है? Now brain blitz, which birds cannot fly? इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे. कौन से ऐसे birds हैं जो उड़ नहीं सकते हैं? ठीक है? Now making nest. Okay, how birds can make nest? Birds make nest to lay eggs mostly on trees. Why birds make nest? Because for laying their eggs. Okay. Some birds make the nest on the ground also. When the nest is ready, the female bird lays eggs in it. Okay. And some other category of bird also used to build their nest on the ground. Okay. And then their nest is ready either on the tree or either on the ground. Okay. Now the female bird is also ready to give their, or you can say lay their eggs in it. Okay, now some brain blitz question. Let's see, which animal sound is known to be very pleasant? Sorry, which bird sound is known to be very pleasant? You are going to give the answer to this question. Okay, now hatching of eggs. Now what is the meaning of hatching of eggs? Let's see, hatching of eggs, either of the two partner sit on the eggs to keep them warm. The eggs break open in few days and the baby bird come out. The parents look after them and feed them till they are ready to fly. हैचिंग ऑफ एग्स का क्या मतलब होता है? अब फीमेल ने अंडे तो दे दिए, उस अंडे को गर्म रखने के लिए या तो फीमेल बर्ड या फिर मेल बर्ड दोनों बारी बारी से उसके ऊपर बैठते हैं. ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद वो अंडे क्या होते हैं, टूट जाते हैं. जब वो अंडे टूटते हैं तो उसमें से उनका बेबी बर्ड बाहर आता है. ठीक है, तो पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स
मेल बर्ड और फीमेल बर्ड, ये दोनों पेरेंट्स मिलके उस बच्चे का ख्याल रखते हैं जब तक वो उड़ने लायक ना हो जाए. ओके, सो यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ हैचिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, female bird lay eggs, okay, and after few days that egg break into two parts, okay, and after breaking up that egg, a new baby bird comes out, okay, and last you can see baby bird. Okay, so this is the whole process of hatching of eggs. Okay, now we are going to see the sounds of birds. Okay, so different birds, okay, we have seen different types of birds. It means if they have different types of beaks, then also they can make different types of sounds. So let's see. बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स. ठीक है, तो बर्ड्स बहुत सारे साउंड्स निकालती है, जैसे ग्रून्स, काउ काउ, क्रो. क्रो किस टाइप का साउंड निकालता है? काउ काउ. ओके, देन कुकू, गुटरगू. पिजन, तो पिजन क्या करते हैं? कुकू मीन्स गुटरगू. ठीक है, देन कुकू, कुहू कुहू, कुकू. तो जो आपकी कोयल होती है वो कुहू कुहू करके बोलती है. ठीक है, देन हुट हुट, आउल्स, ये हुटिंग करते हैं रात में. ठीक है, नाउ माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स. Let's see the migration of birds. What is the meaning of the migration of birds? Some birds fly back and forth across the world every year. This is called the migration. कुछ बर्ड्स पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो जहां के रहने वाले उस जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह चले जाते हैं. इसी को माइग्रेशन कहा जाता है. पर वो यहाँ पे सवाल ये आता है, वो बर्ड्स क्यों छोड़ के जाते हैं? इसलिए जाते हैं, there are the three main reasons for birds to migrate. Okay, so we are going to see the three important reasons for which bird migrate from one place to another place. First reason is in search of food. Okay, in search of food, birds usually migrate from one place to another place. Second, in order to breed, okay, for breeding process. And the third, to avoid unfavorable weather condition. Weather condition कहीं कहीं बहुत ज्यादा harsh होता है, उसको avoid करने के लिए. Okay, so my dear student, this is all about our chapter number 3. In this chapter we all have seen about birds. Okay, now come with me and let's see the wrap it up of this chapter. Birds are the most beautiful and colorful creature on the earth. Absolutely true. All birds have feathers. Either they can fly or either they can't fly. Okay, but they have feathers. There are two kinds of feathers, down feather and flight feather. Okay, different birds have different kinds of beaks. Different types के birds हैं, उन सबके क्या है, चोंच भी अलग अलग है. Birds lay nest to birds make nest to lay eggs. Birds nest क्यों बनाते हैं? अंडे देने के लिए. ठीक है. Then some birds migrate every year to escape cold weather, a shortage of food or to reproduce. ठीक है, बर्ड्स हर साल माइग्रेट करती हैं. क्यों? खाने की खोज में, अंडे देने के लिए, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं उनसे बचने के लिए. ठीक है, so here our chapter number 3 ends. Okay, just go thoroughly through this chapter and complete the self evaluation or question answer portion of this chapter. Okay, now my dear students, I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.